Hello, everybody. Welcome back to Kirti Says, and welcome back to another top 5 list. Harris, you ready with the top 5? I'm ready with my top 5. I'm looking forward to this. So, guys, Valentine's Day पे love की बातें होती हैं. So we thought, why not put together a top 5 list of Bollywood's romance movies to watch this Valentine's Day with your lover or friends or just by yourself. Or with your pati, patni and wo. Okay guys, अब जब हमें पता चली गया है कि हैरिस का क्या प्लान है, अपना प्लान हमें कमेंट्स में बता देना, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. एंड हैरिस, लेट्स गो विद आवर टॉप 5 लिस्ट. Let's go. हमें डंडे पड़ने वाले हैं क्योंकि either people are gonna agree or they're totally gonna disagree, and that's fine क्योंकि हर एक का love अंदाज different है, movies उनको अलग अलग पसंद आती हैं, and यहाँ पे at least in my list I try to find different shades of love. तो एक थोड़ा सा cutesy love होगा, एक थोड़ा सा खतरनाक love होगा, एक थोड़ा passionate love होगा, एक थोड़ा sad वाला होगा, तो a lot of a mixture is there. क्योंकि क्या था वो गाना, 7 रंग प्यार के, ऐसा कोई गाना था आई थिंक. 7 रंग के सपनों में मैं खो गई सजना. I only remember सात खून माफिया, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई. Okay, number 5 on my list is जब We Met. So जब We Met release हुई थी 2007 में. It was I think the last movie before एक real life couple का breakup हो गया था, तो वो meet नहीं किए इसके बाद, लेकिन इस movie में इन्होंने meet किया था, and वो थे none other than Shahid Kapoor and Kareena Kapoor. तब कपूर थी, अब तो कपूर खान है. The crazy thing is कि इनकी ना कई मूवीज आई थी और एक भी हिट नहीं हुई थी. जब इन्होंने एक दूसरे से ब्रेकअप किया तब ये मूवी मेगा हिट बनी है, ठीक है. एंड यहाँ पे हु कैन फॉरगेट गीत. I think Geet एक iconic character है करीना कपूर खान का, and obviously in the movie industry she was vivacious, she was opinionated, she was confident, she was like मैं खुद अपने आप की favorite हूँ. And then on the flip side एक reserved सा, थोड़ा सा serious था, थोड़ा quiet सा, एक सहमा हुआ सा लड़का था शाहिद, मेरी तरह. So basically opposites attract, ये मिलते हैं by chance, और by chance एक रास्ते journey में प्यार हो जाता है. A mix of गाने, remember that गाना मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, टन 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 मौजा, and एक और भी था नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा. तो amazing गाने थे, नाचने वाले, and दूसरे भी थे आओगे जब तुम Oh Sajna. Okay, I love that damn song. Okay, I just love that damn song. आज तक जब मेरा मूड होता है ना, उस मूड में होती हूँ तो मैं ये गाना सुनती हूँ. जब रोना होता है ना मुझे I was just gonna ask, साथ में रोती भी है. I think ये movie एक new age kind of a love story थी. It wasn't like the run of the mill like तड़पती आत्मा and रोना पिटना. It was like a journey of finding yourself, and through that discovery you discover each other. Kirti, I loved Jab We Met. It's not on my list, but I would definitely give it a thumbs up because उस time पे जब वो movie आई थी, I was like, damn, Kareena, तू कहाँ से कहाँ चली गई है यार. This was amazing. In terms of romance, the messaging itself, I think it was fun. And यहाँ पे मुझे शाहिद कपूर को definitely कहना है कि he is such an amazing actor. I mean, पहले भी था, but इस movie के बाद मुझे ज़्यादा पसंद आया. I think turning point थोड़ा था. It was a turning point, yeah, definitely. So I think for me, it was definitely a refreshing story उस ज़माने में. Coming to उस ज़माना which was like 10-12 साल पहले. अरे 15 साल हो गई. Yeah, coming to my top 5, मेरी 5वें नंबर में movie है Rockstar. And for me, that movie was just a classic piece. ये movie आई थी 2007 में, and इसमें थी नरगिस फकरी, which was a new introduction in Bollywood. She was definitely the charming girl of the season of that time. And यहाँ पे I just want to say the movie was just amazing यार. I think के वो जो बंदा अपने इश्क के लिए जो गुम हो जाता है, he runs away and then he finds his journey in music. उसमें the music was just amazing यार. उसमें एक गाना है तुम हो पास मेरे तुम हो. Whenever I heard that song यार, I was like, hi, बस the song I remember from this movie is साडा हक एथे रख साडा हक एथे रख ना ना
Nah, Na, nah, nah, na, na, nah, na, nah. na. I think it was classic, yeah. And for me, that movie was just amazing, yeah. I think Ranbir's, I think Kriya was just an uplift for me, definitely. With Mm-mm. this movie, I think he was known. ये आज तक अगर आप रणबीर कपूर को, like in Bollywood, it's famous. अगर जानते हो, तो one of the top movies is definitely Rockstar. I think the story was definitely different क्योंकि हमने इतनी लव स्टोरीज देखी हैं कि घर टूटता है, सास बहू and stuff, but इस वाले में it was totally different. And I think for me, that vibe was just amazing. And I am it, not surprised that you like this movie. why I'm are you not not surprised? surprised. क्योंकि ये जो एक क्या कहते हैं एंग्स्टी एंड एक तरफा प्यार मतलब एक तरफा प्यार नहीं लेकिन वो तड़प एंड वो जो Shut up. हाँ यू रियली मच रिलेट टू दिस वो हमने एक वीडियो की थी जहां पे इसको देव एज अ कैरेक्टर बहुत पसंद आया था बिकॉज ऑफ दिस होल थिंग ठीक है पर आई ऑल्सो अग्री क्योंकि यहाँ पे एक वो नो एक एंगर है एक अंडरलाइन करंट है Yeah. एंग्स का भी था एंड देन ऑब्वियसली जब वो कैंसर वाला पोर्शन आता है द लॉस द फाइट Yeah. द स्ट्रगल एंड वो सब भी है the youth they get attracted to like that angst struggle that journey so I think this is why and also career के ऊपर अगर बात करें I think ये मूवी इम्तियाज अली as a director I think it catapulted him इसके बाद सभी उनके साथ काम करना चाह रहे थे Ranbir Kapoor went from like this lover boy situation to this guy and Ranbir Kapoor ko hamesha se ही acting aati hai like Yeah. and this movie like proved it okay तो नंबर 4 पे आते हैं एंड आई बेट यू अगर मैं तुमको $1 million भी दूंगी ना तो कभी भी ये नेम गैस नहीं कर पाएगा तो क्या ये पुराने जमाने की टाइप की मूवी दादा नो दादी टाइप की कभी कभी मेरे दिल में नो प्यार या मुगले आजम? No, this Okay. is the 2013 film The Lunchbox. Really? Damn, wow. I'm Yeah, actually so surprised. The I reason why कीर्ति is because I just want to say कि मैंने ये मूवी नहीं देखी कि लंच बॉक्स खाने का डब्बा टिफिन मुझे कुछ और ही समझ आ रही थी. नो ये मूवी इतनी अमेजिंग थी एंड थैंकफुली यहाँ पे करण जौहर की बैकिंग मिली थी इस मूवी को सो इट काइंड ऑफ कैटअपल्टेड निम्रत कौर थी इरफान खान थे एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी ओके सो रियली गुड एक्टर्स आर इन दिस मूवी एंड ट्रूथफुली यहाँ पे मैं एक दूसरी मूवी भी मेरी फेवरेट है इरफान खान की दैट आई वांटेड टू आल्सो पुट इन हियर लेकिन मैंने लंच बॉक्स चूज की है द अदर वन वाज करीब करीब सिंगल that is a newer movie about finding the right person and the dating tribulations right वो मुझे पसंद है लेकिन ये वाली is just more nuanced it's just a little bit different यहाँ पे एक वाइफ होती है जो everyday खाना बनाती है अपने हस्बैंड के लिए वो जो टिफिन वाले होते हैं ना they come and take the Mhm. tiffin from the home to deliver it to the husband and husband से कभी appreciation नहीं मिलती कभी comment नहीं मिलती खाने के ऊपर one day the tiffin goes to इरफान खान क्योंकि वो भी tiffin service use करते हैं he's like damn but this was a little missing in the food like salt या ऐसा कुछ and she's like what the hell ये क्या लिखा हुआ आया है तो यहाँ से बातें शुरू होती हैं every day खाना बनता है and then थोड़ा थोड़ा feelings का होता है वो उसके बारे समझती है सोचती है and then reverse and उनको एक दूसरे से मिलना होता है लेकिन वो कभी मिल नहीं पाते they fall in love but they never culminated so I just think it was a really beautiful take on relationships in general एक एज का भी डिफरेंस है उन दोनों के बीच में सोसाइटी का भी डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वन इज इन आवर करियर पाथ एक घर में रहती है हाउसवाइफ है तो अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एंड इट जस्ट शोड कि डिफरेंसेस के बावजूद लोग फील कर सकते हैं डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में भी लोग फील कर सकते हैं एंड देन they can't culminate it because real life the real life है ना so you go back into your real life कीर्ति, that is something that I definitely need to watch. And मुझे लगता है इस मूवी का नाम लंच बॉक्स से ज्यादा नमक इश्क का होना चाहिए था क्योंकि Oh my नमक God. You are नमक so मसाले right. के ऊपर इश्क. To be honest, for me, Irfan Khan is was The definitely best the the best, best like hands down the best. I think Nimrit Kaur is so talented, so beautiful, and usko bhi na Yeah. do nahi mila hai. I really hope she gets work. I really thought कि इस movie के बाद she would get that work and recognition, पर ऐसा हुआ नहीं है. And यहाँ पे हम इरफान खान की बात कर रहे हैं. He is the best. He's like the maestro. And उनके साथ नवाजुद्दीन, who is amazing Wow. as well. So it was just a fabulous, fabulous movie. Talking about different circumstances, मेरी मूवी है and कीर्ति, you're gonna love this because इस मूवी में एक कैरेक्टर है
एंड उस कैरेक्टर के नाम पे तूने अपने बेटे का नाम रखा है समीर, ठंडी हम हवा दिल का दिए झोंका. सनम. Yes, so that is my number four. That is one movie that I can watch again and again and again. Yes. I am in love with that movie. It gives you goosebumps, yeah. I think for me, it was one of Sanjay Leela Bansali's best Best. movie, like one of his best. Like it's me, the whole costumes, the whole look, the mahal and everything was just amazing. Gane, there's a Ghana in there. Al Bela Sajan Of Ayore. love. Oof, I love it. नहीं, इससे अच्छे मैं कह रही थी कि तुझे तड़पता हुआ वो सब अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है, ओके। तड़प तड़प गाना लाइक माइंड Yeah. ब्लोइंग, एंड उससे ज़्यादा झोंका हवा का, वो जो गाना Shoka. था हरिहरन का, इट किल्स मी टू दिस डे, इट गिव्स मी गूज़बम्प्स टू दिस डे, एंड आई कंप्लीटली एग्री कि ये तुमने मूवी लिस्ट में रखी है बिकॉज़ एक लव स्टोरी है, यहाँ पे भी सेपरेशन है, लव ट्रायंगल है, दिस guy and girl come together, they love each other, लेकिन पेरेंट्स को नामंजूर है, उसकी शादी करा देते हैं, लड़के को भेज देते हैं। लाइक कैन यू इमेजिन दैट हस्बैंड जो कहता है नो, आई एम गोना रीयूनाइट यू विद द गाय यू Yeah. लव, तो वो जो सैक्रिफाइस होती है, तो आई जस्ट रियली लव्ड इट। आई रिमेंबर जब मैं बच्ची थी और ये मूवी मैंने देखी थी, आई लव्ड सलमान। लाइक इस मूवी में ऐसा नहीं था कि सलमान ने कोई भी गलती की हो, ही वाज अ ब्यूटीफुल गाय, मतलब looks wise Yeah. and also as a character, like फन था, रिस्पेक्ट करता था लड़की को, कुछ उसने गलत नहीं किया है। पर वहां अजय देवगन का जो कैरेक्टर होता है वनराज, he's just like a self-sacrificing, like इतना भी कोई अच्छा हो सकता है, that kind of a guy. Like as a girl, I didn't know what I wanted. I felt so bad for Sameer कि इसने क्या गलती की है, इसकी कोई गलती नहीं है, and then I was also happy for Vanraj. Yeah. He was so selfless and he got that love that he never tried to keep her. He never tried to robe Jamana. Ki, "Main tera Yeah. pati hu." He never did that. And I was like, does Nandini even deserve these guys? Like, She I don't know. doesn't, for sure. She doesn't. That's what I felt as well. कि दोनों इतने अच्छे हैं, like एक तरफ वो sacrifice दे रहे, this guy's sacrificed everything, he's gone off heartbroken, so I feel for me. एक वो डायलॉग भी था ना, समीर तुमने मुझे प्यार करना सिखाया एंड प्यार निभाना उन्होंने सिखाया, ऐसा कुछ था, राइट? एंड आई एम लाइक, पर एक्सक्यूज मी, वो भी तो निभा ही रहा है ना। Exactly, वो भी तो निभाए रहा है, exactly. So you know what the funny thing is, my mom liked that song in that movie, Nimura Nimura Nimura. She used to love that मैंने song. परफॉर्म किया हुआ है इस गाने पे इन एट अ वेडिंग, तो आई रियली लाइक्ड इट एज वेल। Yeah. लेकिन हैरिस जब छोटी थी तब पता नहीं था, लेकिन डिड यू नो कि ये जो इटली दिखाया था, इट वाजंट इटली रियली, दे I शॉट इट विद know, I found this flowers। out afterwards. ओके, नंबर 3 पे मैंने एक मूवी रखी है कॉल्ड मन मर्जियां। ओके, ये Wow. 2018 रिलीज है, अनुराग कश्यप की। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अनुराग कश्यप, आई लव हिम टू डेथ, एंड ये इनकी लाइक फर्स्ट लव स्टोरी मूवी थी, और मुझे लगा था दिस मूवी इज गोना डू सो वेल, क्योंकि यहाँ पे विकी कौशल, तापसी पन्नू, एंड देन लाइक अभिषेक बच्चन का रिटर्न था, राइट? एंड I loved this movie. एक तो वो जो पंजाबी सेटिंग थी, obviously, okay, so I really loved that. गाने like अमित त्रिवेदी के गाने जो इस मूवी में थे, एक से बढ़कर एक अमेजिंग गाना था इस मूवी में, and one of my favorites is दरिया, and then there's this chemistry जो एक rawness है विकी एंड तापसी के बीच में, she played a character named Rumi, वो एक लव करती है इस बंदे से, ये बंदा बिंदास है, he's like rapper, I guess, विकी का लुक भी कितना अमेजिंग था, एंड विकी lived that character, like he Yeah. lived it, and then Rumi है, she wants to get married, and marriage सुन के इसकी हवाइयां उड़ जाती हैं, she's like, dude, commitment के नाम पे तो हगता है, so that was a really cool dialogue, it shows her personality। फिर वो सुनती है अपने पेरेंट्स की बात, एंड अरेंज मैरिज में वो सेटल हो जाती है, आता है अभिषेक। कैन आई जस्ट से कि अभिषेक ने क्या एक्टिंग की है इस मूवी में, क्योंकि यहाँ पे रूमी इज वेरी लाउड, विक्की इज वेरी लाउड, लेकिन अभिषेक का जो कैरेक्टर है रॉबी, ही इज वेरी ग्राउंडेड, वेरी सटल, वेरी क्वाइट, आंखों के थ्रू ये बोलता है। एक सीन आता है where he kind of catches Rumi with her boyfriend, her ex-boyfriend, and then एक सीन है इस मूवी में जो एंडिंग का पोर्शन है, they kind of just walk
and they have this whole conversation where they're talking about their love, well, not love, their feelings. They're talking about them as people, and then you feel कि ये दिखाते नहीं है हमें, but you feel like चलो इनका कुछ हो सकता है. So it leaves us kind of at a cliffhanger, but you kind of get a sense of what is going on. या लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, या लोगों को बहुत बुरी लगी है. I don't Yeah. know why. I don't know. It's like, I don't know. I don't understand ये इतनी polarizing क्यों है. एंड इसके साथ मैं टॉस अप कर रही थी, ये मैं मनमर्जियां डालूं या एक ऐसी मूवी डालूं दैट इज इक्वली पोलराइजिंग. इट्स कॉल्ड मेरी प्यारी बिंदु, जिसमें आयुष्मान खुराना है, परिणीति चोपड़ा है. आई लव दैट मूवी. लाइक मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी थी वो स्टोरी पूरी की पूरी, कि एक लड़का है जो उस लड़की से प्यार करता है, वो कभी उसकी हो नहीं पाती है. व्हाट आई मीन, दे जस्ट रिमेन इन दिस फ्रेंड जोन काइंड ऑफ अ सिचुएशन. लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये मूवी पसंद थी, तो मैंने ये मनमर्जियां यहाँ रखी हैं. आई जस्ट लव द कलर्स, आई लव द रूटेडनेस, आई लव द लैंग्वेज, आई जस्ट लव द एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी. आई लव. To be honest, I think इस मूवी को उसका ड्यू इसलिए नहीं मिला because I feel के there was not any big A-lister type of character in this movie. चलो विकी आजकल A-lister बन चुके, but Taapsee, she's one of the best and finest actors. But the thing is, she's very underrated. So I do feel के इस वजह से इस मूवी का सीनियो के ना वो इतनी ज्यादा पॉपुलर रही, ना इतनी ज्यादा खराब रही. It was just in between. Movie is just not about having the big stars. It's about the performance. क्या दिखाया जा रहा है, किस तरह से acting हो रही है. And I do feel that these kind of movies are definitely a big, a big gift to the cinema. So I do feel कि ऐसी movies देखनी चाहिए. And I would definitely watch these movies on repeat. Coming to my number 3, it is another Ranbir Kapoor movie. इस मूवी में भी वो गाना गाता है, भाग जाता है, और इस मूवी का वातावरण is what I like, and it is I know. ए दिल है मुश्किल. Now, for me, this movie जब आई थी, I was like, wow. To be honest, हम करण जौहर से कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा. And for me, this was definitely very different. अनुष्का शर्मा is there, रणबीर कपूर, एक different नई जोड़ी है. And for me, Kirti, the music was just amazing. Oh yaar. my Like God. music Arika Singh again and killed me. again and again. It's just the Yes. music, yaar. Like the title Yes. track itself, "Ae Dihle Mushkil" was Oh, beautiful. yeah. That Gana with Aishwarya, "Aaj jaane ki zid na karo." Yeah, That was love, just love. sexy. The saddest part was, the climax scene with the cancer scene, and ek tarfa pyar ki taakat, like that he keeps doing ratta over. I think that emotional scene towards the end when she's like, to airport aa gaya, and that scene, I think for me that was just emotional. Yeah, she was kind of filmy like us कि मेरा सच्चा प्यार वो होगा जो मेरे पीछे airport तक आ जाए. So I think that moment was cute, but overall I think Anushka nailed it. Ranbir, like we said, he's an amazing actor. Ranbir is He just, nailed it. Yeah, yeah. he killed it in that movie. So for me, I think like it was just wow. See, It was just I amazing. have very, like, I love the movie up until the cancer nonsense. Then I had a visceral reaction. I thought it was a cop out. I thought कि ये लड़की उससे प्यार नहीं करती, कभी नहीं करेगी, तो चलो करण जौहर ने मार ही डाला उसको. Like that's what I Yeah, felt. exactly. She could have still just been his friend. Like आप He could force have, नहीं कर yeah. सकते to get someone to love you. And I liked कि ये लड़की अलीज है, जो अनुष्का शर्मा है, वो डटी रही कि मैं तेरे से प्यार नहीं करती. You are my friend. एक boundary है. And ये जो लड़का है Ayan, he's just after her, after her, after her. And after a point, I was like, damn, stop being a loser. Like, move on. ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा था. मुझे मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था. And I really like Sabha, जो ऐश्वर्या का character है. Yeah. She's like, dude, like, I'm into you, boy, but I'm not a Zaria for you to make another girl jealous or try to, get over her by using me. I like it. दोनों लड़कियों ने लात मारती उसको, like, Yeah. that's what I felt about this movie. I understand that Karan Johar likes to add these emotions in his movies. Mhm. I think हर movie में वो किसी को मार ही देता है, ठीक है ना, चाहे वो बाऊजी हो या माजी हो या दादी हो, he kills everybody. But for me, I think the emotional side of it was just something that was melting. Obviously, there's certain things I don't agree with, like you mentioned, ke Sabha ke saath jo hua, I definitely don't agree with it. But the fact is ke the movie itself was definitely a good movie. कि ये movie आप बार बार देख सकते हो. There's so many things to understand from there, and to implement in your life के ये चीज गलत है, इस चीज को avoid करो, ये चीज गलत है, इससे दूर रहो. So यहाँ पे number 2 on my list is a 2013 release,
रामलीला। यहाँ पे हमें एक रियल लाइफ जोड़ी मिल जाती है, रणवीर सिंह एंड दीपिका की। आई थिंक उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वाज फायर एंड आई थिंक कि ये हो ही नहीं सकता था कि उस केमिस्ट्री को देख के ये दोनों लाइक ना एक साथ हों। यू नो व्हाट आई मीन? गाने एक से बढ़ के एक तो राम चाहे लीला चाहे, दैट सॉन्ग बाय प्रियंका वाज अमेजिंग। एक लहू मुँह लग गया, एक Oh, थेरेंस लुइस ने कोरियोग्राफ जो किया था अंग लगा दे, दैट वाज अमेजिंग। आई लव द हिस्टोरिकल फिक्शन। ये हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं था लेकिन ये एडेप्टेशन था। एक पीरियड पीसेस नहीं होते, एन yeah, एडेप्टेशन ऑफ दैट यूजुअली विशाल भारद्वाज करते हैं। यहाँ पे संजय लीला बंसाली ने किया था रोमियो एंड जूलियट। सो आई लाइक द इंटरप्रिटेशन। एक रूरल एरिया में गुजरात में ये शूट हुआ है। संजय लीला बंसाली हैज अ गुड वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कॉस्ट्यूम, सेटिंग, डायलॉग्स। ये जो फील होता है ना एक सेटिंग yeah, का, मेक्स इट कम टू लाइफ। इस मूवी में मुझे रिचा चड्ढा भी बहुत अच्छी लगी थी। इस मूवी में मुझे सुप्रिया पाठक इतनी अमेजिंग लगी थी। इवन गुलशन दवैया वाज रियली गुड। सो yeah, आई थिंक द स्टार क्रॉस लवर थीम तो होता ही है एंड आई थिंक इस मूवी में बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट हुआ है। These two people from warring clans, I guess, come together as दुश्मन नहीं है, then they fall in love, लेकिन इनका प्यार किसी को बर्दाश्त नहीं है and उनकी दुश्मनी के अंदर ये दो खत्म हो जाते हैं। एंड एक तो संजय लीला बंसाली सब कुछ इतने बड़े स्केल में करते हैं ना, दैट इज लाइक अ विजुअल ट्रीट। एंड देन इसके बाद ऑब्वियसली हमें डिफरेंट मूवीज मिली हैं इनकी एंड दोज आई काइंड ऑफ पुट इनटू हिस्टोरिकल पीसेस। तो मैंने वो नहीं यहाँ डाली। लाइक समवन माइट से कि बाजीराव मस्तानी इज अ लव स्टोरी और व्हाटएवर, एंड आई गेट दैट। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ शुरुआत हुई थी ना इनकी, यहाँ पे yeah. रामलीला, आई थिंक द केमिस्ट्री वाज जस्ट फायर। इस मूवी को मैंने अपने स्पेशल मेंशन में डाला था, to be honest. But because you've mentioned it now, I have to talk about this movie. It definitely is one of my favorite movies. I love Deepika, I love Ranveer. दोनों साथ में क्या firing chemistry थी यार. It was just amazing. रणवीर इवन सेड कि इस मूवी के थ्रू हम साथ आए हैं, इस मूवी के Yeah. थ्रू हमें प्यार आया, इस मूवी की ऑडिशन के लिए हम गए, मिले वहां पे, मैंने उसकी दांत से एक चीज निकाली और मैं बिजली की तरह ऐसे हो गया, वहां पे मैं गिर गया, लट्टू हो गया. सो आई डू फील दैट दिस मूवी हैज brought them together, and I Yes. think the whole movie was just amazing, It was yaar. good. It was good, हर scene, the colors, everything, And yaar. their गाने, careers were like catapulted. Like मुझे it एक was, सीन याद है, जहाँ पे वो सेल्फी ले रहे हैं एंड वो दुश्मन बन गए हैं, वो अपने लाइक क्लैन का वो हेड बन गया है, वो अपनी and he's like crying and smiling at the same time. It was just a beautiful like yeah. whole Even that scene, Kirti, you know, when the you've talked about Dushmani, even the scene जब उसके भाई को oh murder हो yes. जाता है, that tush tush scene, that for me was like, wow, it was well shot, Yeah. amazingly नहीं, एंड executed. वो जब रिचा चड्ढा अपने हस्बैंड की बॉडी में से वो गोलियां निकालती है, ओह Yeah. या Coming to my second movie, number two, Veer Zara. Yeah. या So Kirti, जब ये मूवी आई थी, I was like, damn, क्या star cast है यार. रानी, शाहरुख, प्रीति, two different countries की दोस्ती हमने देखी थी. We saw a love story of two people from two different borders. या It was definitely not different because हमने ये मूवी ऐसी लव स्टोरी देखी है या गदर एक प्रेम कथा में, ठीक है, या because they're from two different countries. But यहाँ पे it was done amazingly यार. And once again we're going to talk about music, of course, क्योंकि यहाँ oh पे लता god, मंगेशकर ने जो गाने गाए हैं, oof. चाहे वो तेरे लिए हो, चाहे वो दो पल रुका, oh my god, Yes, it was oh just god, I love. amazing. And then आया तेरे दर पे, oh my आया god, तेरे दर पे दीवाना, not even that, that Lori song was just yeah. amazing यार. The I way it was, think the late Madan Mohan के जो बचे हुए tunes थे, I think they used it in this movie, if I'm not yeah. mistaken, and I thought it was magical. It was magical, yeah. For me, this is one of the best love stories. I think just that I said they showed how Shahrukh goes, leaving his, his Yeah, job, his career at stake, knowing that I'm going to a different country. शायद मैं जिंदा वापस ना आ जाऊं. He goes there to get yeah, up. वहाँ पे बहुत कुछ I होता है. love it. Get stuck, jail में. I want to give credit to Rani because for me Yes. that was amazing. या क्योंकि It was यहाँ पे amazing. ऑब्वियसली लव स्टोरी तो वीर एंड जारा के बीच में है Yeah, and वो दिख रही थी एंड it was beautiful, लेकिन जो compassion जो रानी ने दिखाया था as Samya as a lawyer, it was amazing. I yeah. think the movie was just beautiful. Like I had just mentioned, मुझे period pieces बहुत पसंद है and ये एक period piece ही It's a था, classic. once again star crossed lovers kind of a theme, Yeah. बिखर जाते हैं and एक वो जो
letter, वो जो poetry जो होती है, मैं हूँ कैदी 700, whatever his name is. 786 जेल की सब Oh बाहर God. Okay. Now my number one might not be anyone else's number one, but is my number one and mine alone. And it is Dil To Pagal Hai. Okay. वाओ I know ये सबकी favorite movie नहीं होंगी, लेकिन मेरी है. I love musical. ये musical ही है in a sense, you know, with the dancing. The music is amazing in this. From अरे रे अरे तो अब तक चुप बैठे तो चांद ने कुछ कहा to लेगी लेगी, you know, everything is amazing. And then the star cast. एक तरफ शाहरुख अमेजिंग और दूसरी तरफ माधुरी, and then you have Karishma, and then you have Akshay in a, you know, cameo. मुझे राहुल as a character बहुत अच्छा लगा, पूजा बहुत amazing लगी, even Nisha, you know, everyone had their characters. I think acting mind blowing थी, I think pairings बहुत अच्छी थी, I think present उनको बहुत अच्छे से किया था. यश चोपड़ा knows how to present love stories. अगर आपको नहीं पता guys, हमने retro review किया हुआ है दिल तो पागल है का, तो वो भी जरूर जाके देखना. हर एक सीन डायलॉग इस मूवी का मुझे बहुत एपिक लगा है. यू नो हर एक फ्लेवर है लव का इन हियर. यू नो यहाँ पे भी एक तरफा प्यार है. You know, from Ajay and from Nisha, right? They're both in love with their childhood friends, but their childhood friends don't love them. Then you have this feeling of sacrifice. जो पूजा होती है, वो बोझ तले होती है कि, you know, this family took me in and now I think I have to repay them. Then sacrifice from Rahul कि, okay, इसका पहले ही she's promised to someone, so maybe she can't be with me, so he sacrifices, you know? And then वो कैसे एक दूसरे के साथ आते हैं. I just love this damn movie. And guys, अगर ये पूरी लिस्ट एक तरफ रखो ना, मैं तब भी ये मूवी चूज करूंगी. कोई टॉक्सिक कैरेक्टर नहीं है, कोई विलन नहीं है, कोई किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता. इट्स लिटरली जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव. See, Kirti, that's the thing I like about Yash Chopra is कि जब वो movies बनाते हैं, there's not always much of, you know, villainous, yeah, negativity in his love stories. And that's what I like. And this movie, I definitely agree. I think it's definitely an amazing movie for sure. Especially Yeah. Madhuri. दोनों के बीच में dance competition चल Oh रहा है. yeah, well, Madhuri oh and yeah. Karishma के बीच में. That was just amazing. I was like, नहीं, damn, वो और पास crazy. वाला scene like killed me. I was like, oh my god, what's happening? Yeah. और And एक पास. वो था, and एक वो था, मैं आंखों में डाल के आंखें डाल के देखो और कहो कि तू मुझे प्यार नहीं करती. नहीं करती क्या? जब मैं तुझे छूता हूँ तो कुछ नहीं होता. नहीं होता. I was like, oh my god, what is happening? Like it was killing But it me. was super cute. It was super cute. Yeah. Coming to my number one movie now, and I know ये सबकी favorite movie होगी Okay. क्योंकि ये movie इतनी पुरानी है लेकिन ये इंडिया में आज तक सिनेमाज में चल रही है. And उसमें एक डायलॉग है, अगर ये तुझसे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी. पलट पलट. पलट पलट जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. So it's ऐसी none other than छोटी-छोटी बातें बड़े शहरों में होती रहती हैं, सेन्योरिटा. exactly. As you guys must have guessed, it is none other than DDLJ. And for me, this movie is timeless, classic. Kirti, to be honest, this was actually the first movie ever that I've watched, Hindi movie, as a child. I remember जब ये movie आई थी, उस वक्त there used to be, you know, like those cassettes, फिल्में जो Yeah, होती. yeah. So my dad actually bought this movie for me, and he was like, you know what? ये एक movie देखो, family movie है, अच्छी movie, साफ सुथरी movie. That's the dialogue he gave to me, and that is the first Hindi movie that I watched, and I loved it. And since then, I've been like crazy on Yeah. this movie, yaar. It has everything. Obviously, music bhi hai, Oh, yes. उसमें romance bhi hai, गाना bhi hai, and I think this is one of the movies that introduced, you know, Yash Raj ke baal urna and you know sari and stuff. And Yeah, खेतों में घूमना and then London का दिखाना and stuff. And I yeah. think that was just one of the biggest grand movies, यार. That's I think मुझे याद है as a little child जब मैंने ये मूवी देखी थी and I saw it so many times, ये मुझे इतनी relatable लगी है ना, because yeah, we were born and bred outside of, you know, India and you obviously Pakistan. तो ये जो families होते हैं, जो parents होते हैं, जो इतने strict होते हैं, जो इतना वो एक protected माहौल होता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं, you know. So as a little kid, I resonated with that क्योंकि मुझे yeah. भी मेरे dad, you know, सिमरन के dad जैसे ही लगते थे. मुझे लगता था कि मैं सिमरन हूँ, you know. I think ये movie आई थी 95 में, तो I was like in, you know, kindergarten, first grade में ऐसा मेरा कुछ था. Same. So, you know, तभी से I'm like, oh, love and this and that, you know. I was
very filmy बच्ची growing up, and I still am. I just love that क्योंकि वो बाहर का माहौल दिखाया, and वो भी दिखाया कि हमारे parents भी, I'm sure your parents, I know my parents, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, not to like settle back and not anything like that, but just so our kids can see how India is, so our kids Yeah. can be in that mahal and our kids can learn things, ye hota hai khaskar, like growing up, like being a child of the 90s, ye tha kyunki life bahut different thi, internet and social media was not there to bridge the gap. Ek to wo gana tha ghar aaja pardesi, I think Yeah. every immigrant that settled outside loved this song, and ek wo tha रुक जा ओ दिल वो दिल दीवाने, है ना? दीवाने। और एक ये गाना था जरा सा झूम लूं में, ये जब यहाँ स्नो स्टॉर्म आया था ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ ये रील बनाना चाह रही थी इस गाने पे, वो नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन इतने आइकॉनिक ये गाने हैं, एंड देन हाउ कैन यू फॉरगेट मेहंदी लगा के रखना, एक विलेन नहीं है कोई per se, लेकिन थोड़ा सा एंटागनिस्ट आ जाता है Yeah. यहाँ पे, कुछ like it's not really toxic. I think it's a fun movie. आप बार बार देख सकते हैं, emotional भी ये movie है. A lot of culture is also in this movie. You're right, like your dad said, ये family movie है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक love story भी है, and एक arch भी है, एक learning भी होती है from the family. And Yeah. have you noticed, Harris, how many Shah Rukh movies we have on our list? Yeah, because Shah Rukh is the best at romance. Come on, guys. We Speaking of know this. romance. Okay guys, जैसे हमने प्रॉमिस किया था, हम Yeah. 5 मूवीज नहीं पिक कर सकते थे, एंड अगर आप ट्रैक पिक कर रहे हो, मैंने तो 2 और फिल्म्स का नाम अपने लिस्ट में डाल ही दिया था कि आई वाज चूजिंग बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, लेकिन Yeah. यहाँ पे अगर मुझे स्पेशल मेंशंस करने हैं तो 2 मूवीज है जो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ, ठीक है? एक तो है सिलसिला. This is like one of my parents like favorite movies ever. मैंने भी बहुत बार देखी है क्योंकि उन्होंने मुझे क्लासिक हिंदी मूवीज बहुत दिखाई थी. रेखा, Amitabh Bachchan, and Jaya Bachchan. Like, can you get a bigger casting coup than this? Never. Yeah. Never. तो यहाँ पे वो भी controversy थी कि taking it from the real life into the real life, तो ये हो रहा था, तो वो भी intrigue था. And then Rekha, क्या beautiful बंदी है, my goodness. And she had chemistry with Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan is like a poet, and Jaya Bachchan का जो वो quiet like but strong character है, song so आज तक आप सुन सकते हो. Once again एक यश चोपड़ा की फिल्म है, तो यहाँ पे एक तरफ हम शाहरुख की फिल्म्स बता रहे हैं और एक तरफ यश चोपड़ा, because these two people are synonymous with love and romance. तो इनकी मूवीज अगर हम नहीं लेंगे तो we must be aliens. मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने सिलसिला नहीं देखी है, please watch it. It is definitely worth the watch. It has that extramarital affair kind of a thing angle in there, because एक loveless marriage है, एक forced marriage है, all of that is going on. And एक दूसरी फिल्म है जिसका मैं यहाँ नाम लेना चाहती हूँ, it's सदमा. कमल हासन और श्रीदेवी की एक मूवी जो डब हुई थी, लेकिन मैंने हिंदी वर्जन ही देखी है. It's like जैसे मूवी से सदमा, it's a different angle of love. एक श्रीदेवी का कैरेक्टर होता है जो एक एक्सीडेंट के थ्रू she regresses into a child like state, mentally. And ये कमल हासन का कैरेक्टर उसको टेक केयर करता है, कैसे वो अपनी दुनिया बना लेते हैं. He's taking care of her and then he slowly starts developing feelings for her. एक beautiful गाना है इस मूवी में सुरेश वाडेकर का, ए जिंदगी गले लगा ले. I love that song so much that that makes me cry. Okay, इस मूवी का जो एंड है, it literally is heartbreaking क्योंकि वो रिकवर कर लेती है अपनी मेमोरीज एंड फैकल्टीज, एंड अपने पेरेंट्स के साथ वो ट्रेन स्टेशन में बैठ के वो ट्रेन पे जा रही होती है, एंड ही इज ट्राइंग टू गेट टू हर, ट्राइंग टू शो हर, डू यू रिमेंबर मी, मैंने ये किया था वो किया था, एंड उसको हिट होता है, वो सदमे में चला जाता है. नॉट एवरी स्टोरी हैज अ हैप्पी एंडिंग, और इस मूवी में हैप्पी एंडिंग नहीं है. इस मूवी में आपको दिखाता है what love can turn you into, and what love can do to you. It can leave you devastated. I have a special mention, and एक थोड़ी सी पुरानी मूवी है, but it's a classic, and दूसरी थोड़ी नई है. So I'll start off with the classic, Chandni. Oh my I think to me that god. movie was a pure masterpiece. I Yes. think in terms of romance, Sridevi for sure. Saris. Oh The my saris, god. the yellow sari, वो गाना बारिश में जो वो बीत के Oof. आती है. Oh God. लगी आज सावन की फिर वो गली. Yes. Oh my In that god. yellow sari, oh my God, she looked. I It's think that was definitely a Yash highlight for me. Chopra once again. Yash Chopra. Yash Chopra once again, exactly. And guys, I'm not promoting Yash Chopra. His And movies, the yeah. late, basically the late, actually,
Everyone in this movie, Vinod Khanna, Rishi Yeah, Kapoor, Sri Devi, they are no e- longer with us. But क्या heavyweight actors थे ये, क्या acting थी, exactly. क्या story थी. Oh my God, heartbreak. It was just a beautiful story, guys. Beautiful movie. Oh my God, like Like you what can a watch this movie on repeat yes, again yes, and yes. again and again and again. It's just amazing, yeah. The music is divine. As a little baby, मेरे हाथों में no no. I used to That dance was to this song classic. like crazy. मैं बता नहीं सकती. What is your other one? My other one, I don't think you're gonna agree with me, but ये एक नई latest movie है, हाँ. and it is Rocky and Rani की प्रेम कहानी. The reason why now I is like this because movie. I think for me, this movie, more than romance, was just fun. There was not a single moment where I was watching this movie and मुझे हंसी नहीं आई. No, Funny, it was I like it. so I think amazing. romance भी था. I think Romance Rocky bhi movie tha, and I है. think it was Yeah. a cute movie. Yaar. Talking about medleys, the Ghana that Oh, जो that old Alia school. Bhatt and Ranveer date, and उसमें वो Shabana Azmi Yeah, and Dharminder ji were romancing, yeah, and उनमें जो chemistry थी यार, it was just amazing. yeah. Alia and Ranveer में different. And Rocky is a green flag, a green carpet. He's a green Yeah, he's everything. What a amazing, guy. yaar. What Yes. a guy. Like he Yeah. says, मुझे जप्पी चाहिए ना. Jappy is Yeah, like I Jappy. love, I I think for love. this guy, you can meet and just give him Jappiya, yaar, because he's He's just so good. amazing. And then Rani ki Right. sariyan, Rani, like, oh, Trending amazing. The chemistry between Ranveer and Alia. I think ye love was just story. And I off. love ki Harris, yahan pe ek contemporary love story jari hai. And then you have the old world romance, Yeah. ek bichda hua pyar, ek forbidden love. This movie was just different. And I think it was different in terms of Karan Johar's work because hum dekhte hain, he makes these, very lumpy, emotional, full, Mhm, family type movies and stuff. He be family movie hai, but this mhm. was definitely different to what he's done yahan pe. And I think for me, Jaya Bachchan in a kind of antagonist role was definitely He something killed different. it. Yaar. Usme I want to give shout outs to Anjali Anand, the sister of Rocky. That scene that she did, yaar, lamba lamba gungat. I think that was just amazing. I think she was just wow. तो यहाँ पे हमने आपको बता दी है our top 5 romance movies in Bollywood to watch this Valentine's Day. तो हमें comment section में बताना, do you agree with our list? What would be your additions and which movies maybe you would take out? जाने से पहले आप please like भी करना and subscribe भी करना and share कर देना, हमारी भी थोड़ी help हो जाएगी. Okay guys? So see ya and Yeah. happy Valentine's Happy Day. Valentine's Day, guys.